The countdown to Chandrayaan-3's moon landing is underway with just a week left for the Vikram lander to land on the south pole of the moon. Today, the Vikram lander separated from the spacecraft successfully. The lander is expected to undergo a deboost, that's a slowing down before its landing on the 23rd of August. Here's a report on the journey. 4, 3, 2, 1, 0. Chandrayaan-3 was launched on the 14th of July 2023 from Sriharikota using the launch vehicle Mark III. Normal. It reached the moon's orbit on the 5th of August and has since been orbiting the moon. On the 16th of August, the Chandrayaan was put in an orbit of about 153 kilometers by 163 kilometers and all lunar-bound maneuvers were completed. Today, after the propulsion module and the Vikram lander separate, and that's a process that you can see here in this animation, the propulsion module will continue its journey in the same orbit, having done its job. The Vikram lander will be further deorbited into a 100 kilometer by 30 kilometer elliptical orbit. On the 23rd of August, after the preloaded commands are triggered, the Vikram lander will attempt a soft landing on the surface of the moon. After the lander touches down and the lunar dust settles, the Pragyan rover will be rolled down. Vikram will take images of the Pragyan rover and the rover will take images of the lander. The first Indian selfies from the lunar surface will arrive. The 14 Earth Day planned scientific exploration of the moon will begin. पहले तो ये कहूँगा, जैसे हम सब जानते हैं, उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे ना केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान-1 भी और अब चंद्रयान-3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए. All right, let's shift our focus now to Himachal Pradesh, where there was some relief today with the weather clearing, but over 70 people have died in the last couple of days, and losses suffered amount to around 7,500 crore, while 2,500 people have been relocated to safer areas. But for many families, the losses are insurmountable. NDTV's Parimal reports from Shimla. बादल गरजने की आवाज़ आई तो फिर जैसे ही एकदम से उठा मैं, तो पापा की आवाज़ सुनाई दी कि मेरे को बचाओ. तो मैं जैसे ही उठा, मैंने दरवाज़ा वगैरह तोड़ा, अंदर गया तो देखा इनको ऊपर मलबा था आया हुआ जी. तो मैंने थोड़ा सा इनको उठाया ऊपर, तब इनको बोला, मैं कहा आप ठीक है? कहते हाँ मैं ठीक हूँ. और फिर उसके बाद मैं पहले सिस्टर के रूम को गया, उनका पूरा कमरा मलबे के साथ फुल था. फिलहाल हम शिमला के पास समर हिल में हैं और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये ट्रैक दरअसल उस टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो कालका से शिमला के बीच में चलती है. आप यहाँ पर देखिए, ये ट्रैक है और ये ट्रैक के नीचे जो है मरम्मत करने में एक लंबा अच्छा खासा वक्त लगेगा. और जो लैंडस्लाइड हुआ, जो बादल फटा, उसके बाद जो सैलाब एक तरीके से पानी जो यहाँ से निकली, वो नीचे किस तरीके से इस ट्रैक के अंदर का पूरा जो बेस था उसको लेते हुए अंदर चली गई. पानी का जो पूरा एक धार चला, उसके बाद इस ट्रैक के नीचे की जमीन तो गई ही, सामने में नीचे मंदिर जो है वो पूरी तरीके से चला गया. वहां एनडीआरएफ की टीम आपको दिख रही होगी. अब पहाड़ की इन मुश्किल रास्तों से होते हुए हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे बताया जाता है कि 100 साल पुराना शिव मंदिर था, लेकिन अब स्थिति क्या है वो भी देखिए. ये जो जगह है जहां पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, ये जो आपको मलबे जैसा चीज दिख रहा होगा, दलदल जैसी चीज दिख रही होगी, ये पूरा मंदिर था.
कुछ नामो निशान जरूर हैं दीवार के, लेकिन फिलहाल मंदिर नहीं है और वो भक्त नहीं है जो उस दिन पूजा अर्चना करने सुबह सुबह शिव मंदिर पहुंचे थे। हमारे साथ एनडीआरएफ के 14th बटालियन के इंस्पेक्टर नफीस खान हैं। नफीस जी, ये समझना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे कितने शवों को आपने निकाला है? अभी तक 1300 जो है निकाला जा चुका है और कुछ बॉडी पार्ट्स जो है मिले हैं वो भी निकाला जा चुका है। जी। और कितने लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके अपने इसमें दबे हो सकते हैं? टोटल 21 जो है ऐसा क्लेम हो रहा है कि इनके 21 हैं इसमें। आपके भी कोई अपने हैं? हाँ, मेरे 2 परिवार हैं यहाँ पे किन्नौर से, एक शंकर नेगी और दूसरा अविनाश नेगी। इसी में? हाँ, इसी में। उस दिन पूजा करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 3-4 दिनों से हम लगातार ढूंढ रहे हैं, अभी तक 3-4 दिनों से लगातार आ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं ऊपर गया, दूसरे मकान को ऊपर, जो ब्रदर का मकान था वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। कौन कौन लोग थे परिवार में जो अब नहीं हैं? मेरे भाई साहब नहीं हैं, 3 बच्चे नहीं हैं, भाभी नहीं है, बहू नहीं है, 5 आदमी नहीं हैं, 2 अभी मिले नहीं, भाई साहब और एक बेटी मिली नहीं। पोती जो है हमारी मिली नहीं। जी, अभी तक मिली नहीं, वो चल रहा है उसमें? हाँ, रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी अब संभावना तो धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही है। मन में एक चिंता भी रहता होगा, हर दिन जाते भी होंगे। मन में ये है कि अंतिम दर्शन तो हम कर लें। हर परिवार की होती है कि मैं अपने भाई के दर्शन तो कर लूं जाती बार। यही कर रहे हैं कि हमारे भाई मिल जाए, हमारे उसकी गति मुक्ति हो जाए। बाकी हम क्या चाहते हैं, उनका तो एक बेटी बची हुई है उनकी जो शादीशुदा है, और क्या बोल सकते हैं। बाकी हमारे को, हमारी पीठें टूट गई हुई है, हमारा घर बर्बाद हो गया हुआ है ये। Many families facing losses there, losing loved ones. Now, the hill state's economy has also suffered a major setback. The tourism and services sector that contributes more than 15% to the state's GDP has been badly affected, while the apple industry is staring at massive losses. Abhay and Geetika Dogra have been running a hotel and a cafe in Shimla for 20 years. But with the unprecedented monsoon and its disastrous effects, occupancy is down from the usual 50 to 60% to just 5%. After being hit by a falling tree, there are cracks in the cafe. खींच खचा के कोई 3-3.5 लाख का तो मिनिमम ऑफ सीजन में कर ही लेते थे महीने में। और अभी क्या बोलूँ, हजारों में भी नहीं पहुंच रहे सर। तो बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। एक्चुअली कैफ़े हमारा 12 तारीख को ये रात को गिरा था पेड़। उसके बाद से 2 दिन तो हमने टोटली क्लोज रखा, क्योंकि पेड़ को उठाना पड़ा, क्योंकि अब इतनी सारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, तो हमने फिर भी इसको 15th को ओपन कर दिया था। Once full of tourists, these streets are now deserted. Taxi drivers spend the entire day waiting for fares. जब से ये आपदा बनी है तो यहाँ पे स्थिति 2000 से 200 रुपए पे आ गई है। मतलब एक दिन में पहले कितना कमा लेते थे पीक सीजन में? 2000 रुपए। और अब कितने पे आ गई? अब 200 रुपए पे आ गई। The apple business has been hit too. The unseasonal rain in March and April damaged apple flowers. Whatever survived cannot be transported now on the broken roads. 75% फसल जो है अभी हमारी बर्बाद हो गई है। उसका कारण क्या है? आज खेत में फसल तैयार है, जो निचले इलाकों के क्षेत्र है जिसको लो हाइट हम कहते हैं, उसका सीजन चला गया है बर्बादी के अंदर। 10-10, 15-15 दिन वो बड़ी मुश्किल से पीठ पर ढोकर उसने किया है। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी हमारे हाईवेज नहीं चल रहे हैं दोनों, आपने देखा है जो मुख्य हाईवे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी हमारी 90% सड़कें बंद है। आज सेब का बागवान इतना चिंतित है कि वो अपनी फसल को किस प्रकार से, जो बहुत बड़ा नुकसान उसको है, तो ये बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट हमारे प्रदेश के अंदर आएगा। Tourism and apples contribute 15% of Himachal's GDP. Now the Chief Minister has estimated it will take 10,000 crore rupees for the state to get back on its feet. टूरिज़्म एक, आप समझे कि टूरिज़्म हमारा जो जीडीपी में 7% का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो हमारा जीडीपी है, और एप्पल इंडस्ट्री का भी तकरीबन इतना ही है। ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये दोनों इस बार जो है इफेक्ट हुए हैं बुरी तरह से। The economy needs help too to recover in Himachal.
But all the residents and the government can focus on now is rescue and shelter. With camera person Sudesh Ram, VD Sharma and Parimal Kumar, Bureau Report, NDTV. Neighbouring Uttarakhand is also facing a devastation due to the heavy rainfall and landslides. In fact, just near Dehradun, 26 families have been left homeless after a landslide destroyed their homes. And it's not just the houses, but agricultural land that has also been damaged. Uttarakhand's rain damage captured through the eyes of Jharkhand village near Dehradun, where almost all 26 families have lost their homes to this landslide. The road to the village almost washed away. Mahipal Negi has suffered the most damage in Jharkhand village. All 4 homes of his extended family have been damaged. 4 मकान है, पूरा ही ध्वस्त हो गया है. कुछ भी घर से कुछ भी नहीं निकाल, बदन पे जो कपड़े है वही निकाल पाए हैं. People from the village are slowly moving their belongings to other locations. Many had tears in their eyes when NDTV's team visited the area. Not only have homes been damaged, but agricultural land has also been destroyed by the landslides. ये हमारा घर था यहाँ पे, हमारी ये जमीन भी थी, ये बैठी है यहाँ से, और हमें तो 3 बजे पता लगा, और तब हम यहाँ आए, और फिर उसके बाद जो है जब यहाँ आए तो यहाँ देखा तो सबके घर खाली कर रहे हैं. जाखन गांव में है, विकास नगर का क्षेत्र है, और जहाँ पर पूरी तरह से गांव एक लैंडस्लाइड की जद में आ गया. और ऐसे ही गांव उत्तराखंड में बहुत सारे हैं जो लैंडस्लाइड की जद में है. रोड जो थी ये पूरी धंस चुकी है, पूरी तरह से एक गांव था पूरा धंस चुका है, और इसको अब यहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है. Local administration teams have reached the village and are surveying the damage to make an assessment. पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कल ज़्यादा हुआ. गांव के कोई इसमें हताहत नहीं है, गांव का कोई नागरिक, और लगभग 10 घर हैं जो पूर्णतया डैमेज हो चुके हैं, और 7 के करीब काऊ हाउसेज हैं. SDRF की 2 टीमें यहाँ लगी हुई हैं, वो गांव वालों की मदद कर रही हैं. आज थोड़ी स्थिति ठीक हुई है, आज सिंकिंग नहीं हो रहा है, तो उनके सामान निकालने में उनकी मदद की जा रही है. With Kishore Rawat, Bureau Report, NDTV. Well, let's move on now to political news. And the BJP today announced its first lists of candidates for the assembly polls in both Madhya Pradesh and Chhattisgarh, which is due later this year. This is the first time the BJP announced names of candidates even before the Election Commission of India has announced the poll dates. The parties announced 21 candidates for the 90-member Chhattisgarh Assembly and 39 for the 230-member Madhya Pradesh House. Well, let's go across to our reporters now. And Anurag joins us from Bhopal, and Megha joins us here in a studio. Anurag, first to you, take us through some of the highlights of this first list that has already been announced of candidates for the assembly elections. Yes, Gargi, we are just inside the BJP office in Madhya Pradesh, and if I can tell you, more than 50% of the candidates from the first list are from scheduled caste and scheduled tribe, and 5 women in the first list out of 39. And a few candidates like Dhruv Narayan-Singh or Pritam Singh Lodhi, they were in news few days back. Dhruv Narayan-Singh was a suspect in the infamous RTI activist murder case, and he has given ticket from Bhopal. We are also joined by a few of the aspirants here. सर, बहुत सारे लोग आए होंगे टिकट की चाहत में या टिकट के लिए. आप इंदौर से ननकुराम जी कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो कोशिश का है कि हर कार्यकर्ता जब चुनाव का समय रहता है, जिसको लगता है कि मैं इसमें प्रयास कर सकता हूं, तो अपेक्षा रखता है. आप भी अपेक्षा रखते हैं? हाँ, रखते हैं. पर जैसी भीड़ भाड़ अमूमन होती है वैसी दिख नहीं रही, या जिस तरह उत्साह होता है टिकट मिलने के बाद, या गुस्सा होता है कई जगह तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, कुर्सियां टूट जाती है, वैसा नहीं दिख रहा आपकी पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है. अनुशासित है इसलिए क्योंकि अभी पहली लिस्ट आई है और भी आने वाली है. ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी टिकट मिले. देखो, ऐसी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था आधारित पार्टी है. अच्छा. उसमें जो नेतृत्व जो निर्णय करता है वो सब कार्यकर्ता जो है उसको मानते हैं, इसलिए हर कार्यकर्ता उसके लिए तैयार. बहुत बहुत शुक्रिया. बैक टू यू गार्गी. All right, Anurag, thanks for that. Maybe the BJP in Madhya Pradesh also taken by surprise that the first list came out so soon. So, Megha, tell us more about that, because there's a lot of surprise over how soon the list has come out. Some speculation that this is to avoid what Anurag was describing as chair throwing, or friction rather, which was seen in other states. So they want to, ease out those names and, be able to manage the situation better.
Well, Gargi, I would say that the prime reason why this exercise has happened so early in the day, I mean, you have months to go before these elections, is essentially to ensure that they have perhaps a better strike rate this time around. There are two reasons. One, the setback in Karnataka, despite the fact that, BJP had literally put in all their resources, and the kind of loss that they have faced in Karnataka has sort of, given them the idea that perhaps they need to do a little more. And in states like Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where at least in Madhya Pradesh there's a huge anti-incumbency, they need to counter that. And in Chhattisgarh, they don't look very, very strong. So I think so early in the day, the preparations have started. It is essentially to ensure that BJP does get as close to the victory margin as possible, perhaps victorious in both these places. Also, the reason, yesterday when we reported right after the meeting got over, in a very crucial meeting, the Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party sat down. Prime Minister was there, Mr. Nadda was there, Amit Shah was there, all the top people were there. The entire committee sat and decided, because yesterday when the meeting happened, already the shortlisted list was there on the table. So the candidates were decided upon, but the reason is to give them much, a lot of advance notice, give them a lot of time to prepare, so that when the time comes, they are so prepared that, it is almost inevitable. Their victory is inevitable, Gargi. All right, so they can hit the ground running, but the list being announced months before even the election dates have been announced. Thanks so much, Megha, for joining us with that. Now, news from Maharashtra, where NCP Supremo Sharad Pawar today held a Swabhiman meeting in Beed. He openly attacked Prime Minister Modi during his address, perhaps trying to clarify his stand to the Congress and others who are watching him very, very closely. However, he did not mention his politically estranged nephew Ajit Pawar even once. The Congress member claimed that Sharad Pawar was offered a central position by his nephew during their meeting that took place in Pune, something he's denied. Meanwhile, Ajit Pawar's supporters had put up posters with both the leaders in Beed ahead of this rally. समाजातल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती, पण तिकडे धुमकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही. पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं, 2 दिवस आधी 3 मिनिटं फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले, आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन 4-5 मिनिटं बोलले. पण हे दुःख, त्या भगिनींचं दुःख, हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही. Vindhyagiri, a Project 17A frigate, was launched by the President of India, Draupadi Murmu, at the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in Kolkata today. This is the 6th ship of Project 17A frigates and the last one to be built in Kolkata. The CMD of GRSC described it as the mother of all ship launches. इस पोत का जलावतरण भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जा रहा है। And that's the launch of the third B-17 Alpha. अद्भुत, अविश्वसनीय। It's a matter of great pride and joy for all of us. I am happy to be here at the launch of Vindhyagiri. This event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat. Vindhyagiri, the last of the Project 17 Alpha ships to be built at Garden Reach Shipbuilders and Engineers. These warships are follow-ons of the Project 17 class frigates, Shivalik class, with improved stealth features, advanced weapons and sensors, and platform management systems. Once commissioned into the Indian Navy, she will be known as INS Vindhyagiri. But today is an equally important day in her life. Being launched into water for the first time by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. We are now in the select group of nations that can build aircraft carriers. Our expanding strategic reach based on this vision is the driver for the Navy's acquisition of assets with long sea legs and greater endurance. This beautiful warship in front of you is singularly lucky to have the honor
of being named and launched at the hands of none other than the Honorable President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. Therefore, I would like to term this launch as the mother of all warship launches. The project's first 5 ships have been launched by Muscat Docks Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers between 2019 and 2022, and the 7th one will be launched in September. The launch of the Vindhyagiri is a testament to the incredible progress our nation has made in building a self-reliant naval force, as the Navy aims to become fully Atmanirbhar by 2047. With camera person G.D. Shankar in Kolkata, Saurabh Gupta, NDTV. India tested its emergency alert system today by sending a test flash on several smartphones. Many users heard a loud beep on their phones along with an emergency alert severe. So what does this all mean? Let's go across to Priyanshi, who will explain. That's right, Gargi, and we can safely say that if you got an emergency alert on your phone today, there's nothing to worry about. We'll tell you why. Well, many Android users across the country received an alert with the title Emergency Alert Severe. This alert is to test the government's emergency alert system that can be used to alert people in times of natural disasters and emergencies. There was a loud beep also along with the message, so let's listen to that first. That gives you a sense. As you hear the beep, the message that came along says that this is a sample testing message sent by the Department of Communication. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to test Pan-India emergency alert system being implemented by the National Disaster Management Authority, and it aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies. So when there's a flood or an earthquake, the government can immediately send alerts across the country to our phones directly through this very system that has been tested. Today was the second phase of the cell broadcast testing, while the first alerts were sent on the 20th of July. Alerts were sent to many but not all Android phones, while iOS phones have not been alerted yet. Government sources say that these test alerts will be sent to more phones over the next few months, and after the tests are completed, the government plans to roll out this cell broadcast disaster alert system in the next 6 to 8 months. All right. Thanks so much, Priyanshi, for joining us and explaining to the viewers what that loud sound on their phone meant.